Good morning. Welcome, my viewers. You are watching Because English classes. Today's topic is Psalm of Life. A Psalm of Life. Plus 2 second year. Arts, Science and Commerce. And this is as per the new course of study, this is the last piece of a poem for you. This poem has been written by Henry Wadsworth Longfellow or H.W. Longfellow, an American poet. He was the first American to be honored with Poets' Corner of Westminster Abbey in London. So he is one of the most famous and well-respected poet of America, but in English literature. Right? This poem, Psalm of Life. Psalm means sacred song or sacred song, Pavitra Sangita or hymn. Sung to praise or appreciate God. भगवान को प्रशंसा करने का जो हाइम हम कविता व्यवहार करें, that is also psalm. Right? Here the title Psalm of Life means the song of life. Jivana Giti. This poem, the atmosphere of the poem, is a discussion. This is a discussion or contrasting discussion between the false, wrong idea of life spread by others and the real, the actual or true meaning of life. This has been explained very beautifully and lucidly by the poet H.W. Longfellow. So let us start the poem. Tell me not in mournful numbers. Mournful number. Mournful means sorrowful. Numbers means song, kavita. Tell me not in mournful numbers. So who said this? Here the poet Henry Wadsworth Longfellow tells it. To whom? To those who spread a wrong idea about man's life. What is the wrong idea do they spread? They spread that who said that life is but an empty dream. Life is but an empty dream. Here but means except. It means those wrong sayers, wrongdoers, they spread the idea that life is nothing but an empty dream. ଜୀବନ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ କେବଳ ଏକ ଫମ୍ପା ସ୍ୱପ୍ନ. ଜୀବନ ଏକ ଫମ୍ପା ସ୍ୱପ୍ନ. In simple we can take it, right? এই କଥାଟିକୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତରେ ନ କହିବାକୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ the poet tells them, don't tell me, or the poet rejects the idea, the poet disapproves the idea, the poet deplores this idea. এই আইডিয়াটিକୁ এই କଥାଟିକୁ କୋଉ କଥାଟିକୁ ଯେ ଜୀବନ ଏକ ଫମ୍ପା ସ୍ୱପ୍ନ ଏ କଥାକୁ ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆକୁ ମାନିବାକୁ ସେ ରାଜି ନୁହନ୍ତି. ରାଇଟ୍? For the soul is dead that slumber. Soul, atma. Slumber, deep sleep. Dead, murta. Okay? यार अर्थ होला, the poet says that, कवि कहନ୍ତି जे, the idea that life is an empty dream, जीवन एक दिव्य स्वप्न, जो फंपा स्वप्नर कथाटी may be applicable, may be true, ए कथा प्रयोज्य हो पारे, सत्य हो पारे, in case of those person, से लोगों का क्षेत्र रे, whose soul, जहाँ का आत्मा is dead, मृतप्राय or in slumbers. Slumbers means a deep sleep, घोर निद्रा रहते. By ignorance we can take it, okay? And things are not what they see. हमें जो जिनिस को the things that we see in our eyes are not practically so. It means the things we see may appear different to us and actually it may be different from what it appears to us. जिनिस जमिति आमे देखुछे हमको जमिति देखा जाउछन्ती जिनिस गुडा प्रकृत से नहि पारन्ति. राइट? नेक्स्ट स्टांजा. Life is real. This is the definition, this is the conception, this is the idea that poets advises us to realize, to learn. What to learn? What to learn about life, or what is life in the opinion of the poet? In the opinion of the poet, life is real. जीवन होचे वास्तव. Life is practical. जीवन होचे कर्मपूर्ण. Life is earnest. Life is very serious.
ओके इट हैज इट्स पर्पज जीवन लक्ष्य अच्छी उद्देश्य अच्छी एटा स्वप्न केवल नुहे सेकेंड लाइन एंड द ग्रेव इज नॉट अ गोल ग्रेव मीन्स कबर गोल मीन्स लक्ष्य हियर ग्रेव कबर अर्थ नुहे एटी ग्रेव अर्थ डेथ ए कथाटी से रिजेक्ट कर अमान्य कर आग्रह कर जो मैंने कहते डेथ और ग्रेव मीन्स डेथ इज द गोल ऑफ लाइफ जीवन लक्ष्य है मृत्यु इट मीन्स दोज हु से दैट लाइफ ऑफ मैन एंड्स एट डेथ मृत्यु ही जीवन लोकर जीवनटी शेष हुए दि पोएट रिजेक्ट दिस आइडिया ही सेज दैट से कहते डस्ट द आर्ट डस्ट मीन्स धूलिबाली दाउ मीन्स यू ओल्ड यूज ऑफ इंग्लिश यू तुम्हें आर्ट ए आर्ट आर्ट मीन्स आर जो ई जम आर डॉट दाउ आर्ट इट मीन्स यू आर फ्रॉम आर्ट इट मीन्स मैन कम्स फ्रॉम आर्ट मैन्स फ्रॉम डस्ट मनुष्य धूली बाली आसे डस्ट दाउ रिटर्न एंड इन द एंड मला बेलू यू रिटर्न टू डस्ट से धूली बाली मिसी जाए इन हिंदुइज्म वी हैव आल्सो दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट जे मनुष्य पंचभूत तैयारी पंचभूत लीन ए कथाटी को ये किंतु मानु ना किए मानु ना आम लेखक मानु ना आम कवि मानु ना से कह कथा जे पंचभूत तैयारी पंचभूत लीन और यू आर फ्रॉम डस्ट यू विल एंड इन और मैन कम्स फ्रॉम डस्ट एंड एंड्स इन डस्ट इट मे बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड्स एट द एंड ऑफ एट द टाइम ऑफ डेथ बट नॉट सोल बिकॉज सोल इज इमॉर्टल आत्मा हूँ अमर सोल इज इटर्नल आत्मा हूँ शाश्वत सोल इज इनफिनाइट ए हूँ असीम इट ट्रांसेंड्स ऑल लिमिटेशंस ऑफ टाइम यह समय समस्त सीमा मान को टॉपिक चली जाए नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सरो हाँ वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल ये जो शेष लाइन ए कथाटी कौ बाइबल कौ जगह आलोचना है ना जो मैंने कहते जे मनुष्य धूली आसुच्छी मनुष्य धूली मिसीज से देह क्षेत्र में प्रযোज्य किंतु आत्मा क्षेत्र में प्रযোज्य नुहे नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सरो ए कथाटी को से कंट्रास्टिंग कर कैंसल कर रिजेक्ट कर जो मैंने कहते जे लाइफ मीन्स सम ऑफ एंजॉयमेंट एंड सरो जो मैंने कहते जीवन हूँ किसी आनंद आउ किसी दुखर समारोह आ दुख एवं आनंद इज आवर डेस्टिनी अर्थ आम भाग्य लिखाई निर्धारित होती एंड उद्देश्य शेष और वे माध्यम अर्थात दुख सुख माध्यम में जाए आ जीवन शेष भी से दुख सुख यही जो कथाटी को जो मैंने कहते दि पोएट रिजेक्ट्स दिस आइडिया ए कथाटी से आग्रह कर ये कौन कहते आम पोएट कथा है कौन करवा टू गो ऑन वर्किंग टू एक्ट काम करने को आमको पड़ो एपरी भाव इन सच ए वे दैट एपरी भाव काम करवा कि जे इच टुमरो प्रत्येक आसंता काली बिकम्स ब्राइटर एंड बेटर फॉर अस आम प्रत्येक आसंता काली भल हो मंगलमय हो अधिक रु अधिक सुंदर हो राइट नेक्स्ट आर्ट इज लंग हियर आर्ट ए आर्ट पूर्व मुझे कहती ए आर्ट अर्थ आर इज एम आर बट हियर आर्ट मीन्स द वर्क फील्ड ऑफ लाइफ जीवन कर्म क्षेत्र The poet says that, and we also realize that the art or the work field of man's life is very long, is very broad. But time is fleeting. Fleeting means pass very quickly. समयटा बहुत जोर रे चली जाउछ. It passes, it flows down like water. पानी भेड़िया एवढा सूच चली जाउछ. It means time is very limited, but our work field of life is very unlimited. It is vast, very huge, very wide. Right? And our hearts, though stout and brave, जदिओ आमर हृदय स्टाउट बलवान ब्रेव साहसी जदिओ एक आमर हो स्टिल तथापि लाइक मफल्ड ड्रम्स मफल्ड मीन्स दि ओल्ड डिलापिडेटेड ड्रम पुराना भंगा बाजा उसको कह जाए मफल्ड ड्रम दे मफल्ड ड्रम्स आर यूज्ड से भंगा बाजा मान को व्यवहार करा जाए ड्यूरिंग फ्यूनेरल मार्चेस मीन्स शव यात्रा कौटी करा जाए ग्रेव को मशाणी करा जाए कबर को करा जाए ओके कबर बा मशाणी को शव गला बेले शव यात्रा बेले जो बाजाटी बाजे ता एक पुराना भंगा बाजा एवं या सह तुलना केमती कराई से पुराना भंगा बाजार शब्द जमी डल आज मनीष ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ लाइफ ड्यू टू इग्नोरेंस अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ जीवन विषय में सठिक ज्ञान नथिबारु
Everything man has got. Manishara sabu achi. His heart is strong. His body is strong. His mind is stout. Sabu tar sabu achi. But he is done as the sound of a muffled drums used during the funeral march to grab. बुझिपारा नेक्स्ट इन द वर्ल्ड्स ब्रोड फील्ड ऑफ बैटल आम कह जो मनुष्य जीवनटा आमर जो जीवनटा हूँ ये जीवन को कहूँ इट इज ए बैटल फील्ड प्रत्येक जीवन योर्स लाइफ माय लाइफ एवरीबॉडीज लाइफ आम प्रत्येक जीवन को कहूँ इट इज ए बैटल फील्ड एटा युद्ध क्षेत्र एंड वी आर ईच एंड एवरीबॉडी ऑफ अस इज ए सोल्जर आम भर प्रत्येक हूँ ये युद्ध क्षेत्र जन सैनिक जीवन रूपक युद्ध क्षेत्र इन द ओके इन द बैटल ऑफ लाइफ ईच एंड एवरीबॉडी इज ए सोल्जर राइट बट द बैटल फील्ड इज वेरी ब्रोड आम जीवन जो युद्ध क्षेत्र अच्छे बहुत प्रशस्त एटा अनलिमिटेड बहुत असीम यहाँ बट आवर लाइफ इज जस्ट लाइक ए विभक ऑफ लाइफ विभक मीन्स टेम्पोरारी टेंट्स अस्थायी जो टेंट व्यवहार कराए बाय सोल्जर्स इन द बैटल फील्ड युद्ध क्षेत्र में सैन्य मान व्यवहार करते जो टेम्पोरारी टेंट गुड़ाक ता सहित आम जीवन तुलना अर्थात टेम्पोरारी टेंट आवश्यक पड़ी एठी अच्छी आज काली से न थी पारे घंटाटे पर अच्छी नहीं ही पारे एल अच्छी से न थी पारे सेमती आमर जीवन मनुष्य जीवन इज आज टेम्पोरारी आज द टेम्पोरारी टेंट्स इन द बैटल फील्ड टुडे देयर इज नो गारंटी टुमोरो वी विल लिव ओके वेरी टेम्पोरारी आवर लाइफ बी नॉट लाइक डम ड्रिवेन कैटल तेणु यही परिप्रेक्षी with this type of background regarding the real meaning of life जीवन प्रकृत अर्थ परिप्रेक्षी the poet encourages us advises us inspires us कौन करने कौन न करने ना not to behave like dumb cattle dumb अर्थ मुक्क बधिर गाई गोरु they don't have their mind तांकर निजस्व ब्रेन न था they are drawn by others they are driven by others से आउ कहीं जड़े परिचालित करे जेहेतु तांकर निजस्व ब्रेन नहीं तार जे तो व्यवहार कर मनुष्य तार मास्टर तार प्रभु तार मालिक जमी व्यवहार करे से सेमती व्यवहृत होती कारण दे डोंट हैव देयर ओन माइंड सिमिलरली टुडेस मैन इज गाइडेड बाय द मिस आइडिया बाय द रॉन्ग आइडिया ऑफ अदर्स आवर पोएट एडवाइजेस अस आमको उपदेश दउछथि नॉट टू बी इन्फ्लुएंस्ड नॉट टू बी गाइडेड बाय सच रॉन्ग आइडियाज ऑफ रॉन्ग पर्सन्स किछि लोक माने जीवन विषय भूल तथ्य आमको दौरान द्वारा आम परिचालित हवा ना किमी कौन करवा ना वी शुड आक्ट लाइक ए हीरो मीन्स द कैरेक्टर हीरो मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड डेयरिंगनेस योर कंटिन्यूटी ओके दिस टाइप ऑफ विथ दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड दिस आर एटीट्यूड ऑफ ए हीरो वी शुड वर्क लाइक ए हीरो इन द बैटल फील्ड ऑफ लाइफ जीवन संग्राम में आम हीरो भरी काम करिया पड़े ट्रस्ट नो फ्यूचर हावर प्रेजेंट ट्रस्ट मीन्स विश्वास करिया बिलीव द पोएट एडवाइजेस अस नॉट टू ट्रस्ट और बिलीव फ्यूचर भविष्य को भरोसा न करने को हावर प्रेजेंट ये जिते आनंददायक होना कहीं लेट द डेड आउ गोटे कौन करने कहते ना लेट द डेड ब्यूरी हाँ लेट द डेड पास्ट आम जो अतीत यहाँ मृत या आम पोतीदेवा एक मल्ला मन गोटे शब जमी पोती दौचे तो भूली जाऊे आम सेमती आमर अतीतटा को सेमती माटी तले पोतीदेवा एक मृत व्यक्ति को पोतिला भाई अर्थात ही टेल्स अस एडवाइजेस अस नॉट टू रिमेंबर नॉट टू बदरेबल टू पास्ट जस्ट टू फॉरगेट द पास्ट बिकॉज ओके सो दिस टू लाइन्स आई एम अगेन टेलिंग यू द राइटर द पोएट टेल्स अस दैट फ्यूचर इज अनसर्टेन देयर इज नो गारंटी व्हाट विल हैपन टू यू और मी for future. So we should waste time and energy thinking about or bothering about the future. भविष्य विषय चिंता करी भविष्य विषय उड़े मुंड करें जिते से आनंददायक होना कहीं जदि आम करवा इट इज नथिंग बट वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी यहाँ शक्ति और समय केवल अपचय हम सेमती पास्ट व्हाट हैज हैपेंड इट हैज हैपेंड वी कैंट रिकवर इट आम ताकू फेरई आनी पारिबा नाही राइट सो इट इज जस्ट लाइक डेड पर्सन एटा मृत व्यक्ति भाया सो लेट अस ब्यूरी इट माने पोतीदेवा लेट अस फॉरगेट द पास्ट ओके चलो नेक्स्ट स्टैंजा लाइव्स ऑफ ग्रेट men all remind us we can make our lives sublime. Here the poet Longfellow advises the readers to follow the footprints of the great men, to go through, to study the lives of the great men, so that why to study the lives of the great men? Because we can learn, because we can get the tips, the ideas
from their lives how to overcome the hurdles of life, how to overcome the odds of life, how to make our life successful or sublime. Sublime means महत्ववान. And departing leave behind us. Depart means ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବା ଅର୍ଥ ଆମର ଏଠି ମୃତ୍ୟୁକୁ କୁହାହେଉଛି. In other words, I want to say you, clarify the point. Lives of the great men is very valuable. Their life is full of instructions. If we follow them, if we abide by them, by their principles, lives, we can make our life successful. And once we have made our life successful, ଥରେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିସାରିଲା ପରେ then after our departure, when we depart this earth means when we die, after our death, we will live. ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଯିବା examples for the next generation, the generation after us. ଆମ ପରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ପିଢ଼ି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବା on the sands of time, ସମୟର ବାଲୁକା ରାଶି ଉପରେ. So by following our examples, our next generation can make their life successful and sublime. Next, footprints that perhaps another selling over life's solemn man. ଏଠି ଗୋଟେ ଆଲ୍ୟୁଜନ୍ କରାଯାଇଛି, ବଡ଼ ଧରଣ ତୁଳନାଟିଏ ପ୍ଲେ କରାଯାଇଛି ଭିଉଅର୍ସ. ତୁଳନାଟି ହେଲା ଯେ in the high sea, supposing that one seller is selling his ship in the high sea, and let us again suppose that his ship wrecks in the sea. Wreck means ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ, ପାଣି ଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା. ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କହୁଛେ. ଉପରେ ଏୟାରରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେନ୍ ମାଡ଼ ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଏୟାର କ୍ରାସ୍ କହୁଛେ. ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଜାହାଜ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଶିପ୍ ରେକ୍. So supposing that a seller faces shipwreck in the high sea, man means ସମୁଦ୍ର ଏଠି ସାଗର, and again let us suppose that the seller gets out of the ship sinks, ଜାହାଜଟା ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା. The seller is in the high sea. He looks here and there for help, but there is no possibility of any help. Okay? ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର, ଅଥଳ ସମୁଦ୍ର. At that time he becomes hopeless. At that time he gets frustrated. He loses all hope of survival. ସେଇଠି ସିଏ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ସେ ଆଶା ସିଏ ଆଉ ରଖେ ନାହିଁ. ରାଇଟ୍? ସେମିତି ସିମିଲାରଲି ଆମ ଜୀବନଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର. ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ ଜୀବନ ଚଲାଉଛେ, ଆମ ଏଇ ଜୀବନଟା ଆମର ହେଉଛି ଏକ ଜାହାଜ, and we are the sailor. Like sailor facing and suffering the shipwreck in the high sea, we the people, you, I and others, they also most often face the troubles, problems, odds, ups and downs in their lives. So whenever there is a problem, the poet advises us that we should not break down at that time. তাহলে କ'ଣ କରିବା ନା seeing a forlorn and shipwrecked brother, seeing all shall take heart again. ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାରିଯାଉଛେ, ଜୀବନରେ ହୋପଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛେ, if we remember the examples of the lives of the great men, we can get hope. This recollection of the ideas of the lives of the great men can create a new energy in our body. It can create hope in our body. It can help us march ahead. It will provide us energy to start and to work ahead to solve our problem. Next stanza. Seeing shall take heart again. Take heart means again we will get hope. Again we will be hopeful and we will derive energy from the lives of the great men. Let us then be up and doing. So, considering all the things discussed in the poem about the true meaning and the false meaning of man's life, now in the last stanza, the poet motivates us, inspires us to get up or to be ready and start doing your work. ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ, ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଅ, କାମ କରିଚାଲ. କେମିତି କାମ କରିବ? with a heart for any fact. କାମ ତ କରିଚାଲିବ, but in mind we should be ready. We should have that type of a mindset to face any type of a result of our work. ଆମେ କାମ କରୁଛେ, there may be failure, there may be success, but we should accept both failure and success equally. We should not again break down to see any failure or face any failure.
Fact, okay? It may be good, it may be bad. That set of mind we must have with us. Still achieving, still pursuing. If we act in that way, not carrying the fact, not carrying the result of the work, if you keep on working, if you continue, then we will get success. Success will automatically come. ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ. And when one success comes, let us follow it. ଆମେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା. Then another success follows. ଆଉ ଗୋଟେ success ପୁଣି ଆମେ ପାଇଯିବା. And in this way, gradually, we will be riding, we will be climbing the ladder of success in our lives. Right? Learn to labor and to wait. ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର, ଲେବର କର and wait. Wait ମାନେ କାହାକୁ wait କରିବ? For the result of your work. It means while working, some people, some of us may think that no result is coming. At that time, we are losing hope. We feel frustrated and stop the work. Right? The poet motivates us not to do that. Rather, we should learn that we have to work hard and we have to wait for the result. Okay? So students, thank you. If you like my video, please subscribe it. Thank you and have a fine day.